अच्छा good evening to all learners. Good Good evening evening, to sir. all learners. So let us proceed to discuss MRDE-002 of this volume, Unit 3. MRD Block 4, Unit 3. Voluntary organization, some successful experience in our country. That there are large numbers of voluntary organization exist, and some of the successful experience we can focus today. The main aim of this unit to acquaint with you successful experience of voluntary organization in the field of rural development. What are the numbers of the voluntary organization now exist in our country, how they cooperated to different institutions of the government institutions and small organization, voluntary organization to develop, to grow the rural sectors. How the development of the equally and parallelly will help possible the successful experience of the voluntary organization can choose the ideas. So the focus on the rural self-mobilization, self-reliance, sustainable development are the achieved the remarkable point by some successful experience. Mainly, ଆମ ଦେଶରେ କିଭଳି ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ, mobilization କରିପାରିବେ ନିଜକୁ, how the desire to work, willingness to work, efficiency, skill, knowledge, innovative thought will apply in different sectors, and self-reliance will help possible, and sustainable development will help possible, and by which the economic growth, social development we can achieve by this successful voluntary organization, by the help of the some voluntary organizations like Hind Swaraj Trust, and Ralegan Siddhi, and Self-Employed Women's Association Seva, Professional Assistant for Development Actions Pradhan, and Social Work and Research Center SWRC, and the Tarun Bharat Sangh. These are some of the important voluntary organization helps a lot for this rural development, self-reliance, self-mobilization, and sustainable development. So large number of voluntary organizations have made significant contribution to our rural development. Some of them have been extremely successful in affecting sustainable development among local communities in rural areas. केते गुडी एनजीओ छंती बड़ बड़ एनजीओ सबु जो माने रूरल डेवलपमेंट विकास क्षेत्र रे यथेष्ट परिमाण रे सहायता होइछंती, देशर विकास पथरे आगे नै छंती, सामाजिक संस्कार आनी पहुंचै छंती. So everything we can achieve to some extent, we can grow and develop the rural areas. So first of all, we focus on the voluntary organization Hind Swaraj Trust, Ralegan Siddhi. Hind Swaraj Trust, as it is the pioneer propounder of this Hind Swaraj Trust by Anna Hazare. ना सुनिथे वो अन्ना हजारे जने समाज संस्कारक, जने देशभक्ति कारक व्यक्ति, ओल्ड एज लोक हिंद स्वराज ट्रस्ट गठन करथिले इन महाराष्ट्र रेलेगान सिद्धि. So the development of a village, Ralegan Siddhi hochi goda village in Maharashtra. So Anna Hazare, one unmarried bachelor, and contribute sacrifice dedicatedly for the development of the Ralegan Siddhi village in Maharashtra. Ralegan Siddhi village gote thila माने वर्षा होनथला, मरुडी प्रपीड़ित अंचल, जोठी किभली लोकमानकर सुरक्षा, लोकमानकर खाद्य वस्त्र बासगृह कलेक्शन करि परिबे
एवं सुख स्वच्छंदरे बंची पारिबे. So this area is was underdeveloped, and Hind Swaraj Trust, by the help of the big NGOs and voluntary organization, Hind Swaraj Trust, as that under the leadership of Anna Hazare, founder of Hind Swaraj Trust, and examples of successful of voluntary action in effecting sustainable rural development in Ralegan city district, a village. Developmental work and started and progressed under the charismatic leadership of Anna Hazare, founder of Hind Swaraj Trust. It materialized into a successful experience in rural development through the indigenous voluntary efforts of local community Ralegan city village. We will add honest description about the experience of Ralegan city village. So किभली बाहरु कौनसी से माने डोनेशन किंबा अर्थ सहायता रे से माने डेवलपमेंटल वर्क विकास करि नथिले. बाहरु कौनसी डोनेशन फंड से माने ग्रहण करि नथिले. बट स्वावलंबन इंडिजिनियस कलेक्शन ऑफ फंड्स that helped a lot to grow and develop the Ralegan city village in Maharashtra. The founder of this Hind Swaraj Trust by Anna Hazare. So the basic characteristic features of this Hind Swaraj Trust. Ralegan city is a village situated in the drought-prone area of Ahmednagar district of Maharashtra. माने drought-prone area, मरुड़ी प्रपीड़ित अंचल. सो किभली सुरक्षा देबे लोक माने किभली चाषबास करिवे बंचिबे खाद्य वस्त्र बासगृह किभली कलेक्शन करिवे. It is too difficult task. So the focus point here Hind Swaraj Trust, focused by Anna Hazare, our great leader. Nowadays also he is also having revolutionary attitude for the development of the countries. It has a population of about 2,000, only 2,000 villages in Ralegan district. Because of sustainable development, it has attracted significant public attention and media publicity as a model village. So media विभिन्न सरकारी स्तर को बहुत approach करा है थला. How the development will be held possible, how water sanitation, irrigation will be supplied to the village. Prior to development, Ralegan district was badly affected by drought because of the soil erosion. Soil erosion घटुथिला, मूर्तिका क्षय घटुथिला, falling water table, माटीर तल स्तर रे जल स्तर गुडी को तळु तळु खसी जाउथिला. So water level declines. Scanty rainfall in the area. वर्षा सेते हो नथिला. Most families lived in a state of poverty in the village. दारिद्र सीमा रेखा तले maximum परिवार बंचुथिले. The villagers were exploited by vested interest and social evils as visited by community life of the village. Anna Hazare, a local resident. Anna Hazare thile se Maharashtra Ralegan city village jane local residents thile. Started the development of work at Ralegan city in 1975. He had no specialized training, knowledge and expertise in the field of rural development. Anna Hazareଙ୍କର ସେଭଳି କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ବା ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା expertise से नथिले rural विकास केमिति हुए कथा करे. So निजर desire to work, willingness to work and his efficiency, dedication, sacrifice contribute a lot to grow and develop the Ralegan city village. And in this regard, he strived to mobilize village youth through his moral appeal and selfless commitment to the cause of development. In the course of time, villagers recognized his missionary zeal and charismatic leadership, followed him and made voluntary contribution to the development activity in the village. Anna Hazareଙ୍କର जो moral courage देले, जो recognition से पाइले, सबु youth मान आसी तांको ट्रस्ट रे जॉइन कले एवं तांकर निजस्व कलेक्शन फंड रे तांको गाँव रा विकास करिया पई चेष्टा कले. So
The development work was carried out in the village without any significant financial or administrative from outside development agency. कौनसी एजेंसी ठारू गाँव विकास ପାଇଁ କିଛି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ. Economic development in Ralegan has adhered to the essential progress principle of growth with equity. Growth हला समांतर हारे विकास मध्य घटिला. Adequate efforts have been made to eradicate social discrimination in the village. समाज रे जो तांका गाँ रे जो थिला डिस्क्रिमिनेशन विभिन्न माने पार्थक्य थिला से गुडी को मध्य दूरीभूत होई परला. Next, an essential component in the implementation of all developmental progress has been Shramadana. The young youth mane Shramadana kale. An adult persons from every household contributes voluntary labor without any wage. प्रत्येक घर घर जने लखा adult youth जाइकरी श्रमदान कले without किछि से माने ग्रहण कले नै. So समस्ते आना हजारंकर मोराल करेज सैक्रिफाइस ऊपर भरोसा रखी से माने सबु तांको ट्रस्ट रे बोर्ड रे जॉइन कले. So charismatic leadership of Anna Hazare. Sustainable development in Ralegan has materialized because of the moral leadership. Kahar moral leadership? Anna Hazarenkar moral leadership. Manasic स्तर रे Anna Hazare boost to the young people, youth of the Ralegan district village. समस्त को मानसिक स्तर रे mentally motivated to all the people. So motivation is the power. Motivation is one of the power that press the right button, get the desired action. We can say it is motivation. So Anna Hazarenkar jo motivation to young youth that help to grow and develop the rural areas in Ralegan district. Motivation just it is sea tide बड़ा बड़ा समुद्र लहड़ी आसला भली motivation ठीक सही भली. The people are motivated how to grow without accepting any funds from other agency, outside agency. They collect their own funds. And Anna Hazare, he had no privilege past or celebrated to his advantage. He approached the people without any political agenda and did not raise any false hope and economic upliftment of the village community. से कौनसी शर्त रखिले नाही लोक मानक मध्य आमे किभली विकास करेबा आम गाँर विकास केमती घटेबा. सो Anna Hazare renunciation of his money, land, property and family attachment, everything dedicatedly sacrificed. And development of Ralegan Sidhi district केमती हला. So participation of the poor has resulted in greater mobilization of community. गरीब लोक माने मध्य आधार पार्टिसिपेट कले एवं मोबिलाइजेशन हला कम्युनिटी. Hence the rapid and integrated development of Ralegan Sidhi village was held possible. People of Ralegan decided to remove social and economic disparities under the leadership of Anna Hazare. The Dalits participate in all functions. Dalit marriages are held as part of a community marriage program together with other assets. जो माने दलित डिस्क्रिमिनेशन थिले जो माने बाछंद होउथिले से माने समस्त Anna Hazarenkar मोराल बूस्ट फल रे मोटिवेशन फल रे से माने समस्त दलित माने सबु क्षेत्र रे समान इक्विटी भाव रे इक्वल स्टेटस हिसाब रे इक्वल पोजीशन हिसाब रे समान सबुथरे जॉइन करले एवं सबु क्षेत्र मैरिज मध्य समस्तंकर समान मैरिज सेरेमनी सब अरेंजमेंट करा जाउ थाए. दलित मानन को टिके डिस्क्रिमिनेट करा जाय थाए मैरिज सेरेमनी मान करे तेणु अस्पृश्य भाव रे समान को अलग रखा जाय थाए. यह हला नहीं समस्त समान सम्मान समान डिग्निटी हिसाब रे अधिकारी है. सो एठी सब कोन कले डेवलपमेंट ऑफ Ralegan Sidhi district watershed development कले. Watershed fast because less that rain held in this Ralegan district. So first focused by Anna Hazare watershed development. So since Ralegan is situated in a drought prone zone,
with an erratic rainfall, scanty rainfall. Anna Hazare emphasized the importance of water harvesting. Water harvesting ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ. ତରୁଣ ମଣ୍ଡଳ volunteers constructed and supervised structure to minimize waste waters. ଯୋଉଗୁଡାକ ଯୋଉ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ବା ଅଳ୍ପ ସ୍କାଣ୍ଟି ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ତାକୁ କିଭଳି କଲେକ୍ଟ କରାଯିବ, ତାକୁ କେମିତି ଷ୍ଟୋର କରାଯିବ, ଆମର ତାଙ୍କ ମେମ୍ବରରେ ତରୁଣ ମଣ୍ଡଳ ଜଣେ ଥିଲେ ଭଲଣ୍ଟିୟର. His efficiency dedication also helped a lot to Anna Hazare. ସେ ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେସନ ପାଇ ନିଜେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଥିଲେ watershed development program ପାଇଁ in Ralegan. So Department of Soil Conservation, Social Forestry came forward to strengthen the efforts of Tarun Mandal. Tarun Mandal जो हिसाब रे watershed development ପାଇଁ प्रचेष्टा कले, प्लानिंग कले, स्ट्रेटेजी नेले, सरकार आगुरु सुनु नथिले. तापरे महाराष्ट्र सरकार सुनु नथिले. तरुण मंडल ए प्रोत्साहन इत्यादि देखि, मोटिवेशन देखि सबु organization institution come forward. Strengthen through massive tree plantation and pasture development program. Ralegan has also implemented the idea of social fencing for the protection of trees by banning open grazing by cattle in the village. गाँ गंडारे जो ओपन फील्ड रे जो गाई गोरु छेली मेंढा सब चरुथिले ताको सब बैन करा गला, फेंसिंग करा गला, सब बाड़ा दिया गला. कारण छोट छोट जो गुल्म जातीय वृक्ष सब उठुतला धीरे धीरे बड़ होतला. तेणु गाई गोरु छेली मेंढा जदि चरिबे पड़िया प्रांतर मानकर ताले छोट छोट गछ आउ ग्रो करि परिबो ना. तेणु धीरे धीरे गछ बढ़िला, नुआ गछ चारा रोपण करा गला. सो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम achieved in Ralegan district. Next थिला कोन कैंपेन अगेंस्ट सोशल एविल्स, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास जा सब थिला. ए कैंपेन रे ए ट्रस्ट माध्यम रे अन्ना हजारे का ट्रस्ट माध्यम रे एगडा सब मध्य दूर करा गला. A total ban has been imposed on the production, sale, consumption of liquor in the village. मद को प्रोहिबिट करा गला, प्रोडक्शन बंद कर दिया गला. से अंचल से गां को मद पसी परिबो नाही. सो केते कडियल स्टेप नेला अन्ना हजारे. The implementation of ban of liquor was not easy affair. मद गोटे गां बैन करबा केते माने धनानी प्राण पीड़ा ही थाए, केते संघर्ष रिवोल्यूशन ही थाए, किंतु इजीली सेटा बैन हे गला. So drunkards we are also persuaded and warned. Drunkard मानु को सब warn कर दिया गला. Farmer producer residents of Ralegan do not accept dowry during the marriage of their sons. Dowry prohibition करा गला. The rule is not imposed when their daughters marry outside the village. Outside village रे marriage कले से भली restriction नाही, किंतु गां गंडारू केही भी dowry receive करि परिबे नाही. So practice superstition, practice perpetuated by Dabris or Bhag the devout in the name of religion have been eliminated. So against women, discrimination against women also that avoided through revolution of Anna Hazare trusts, and they neglected their homes and harassed women, children. जो मान सब ड्रिंक करूथिले सेमान तांका पिला मानन को नेग्लेक्ट करूथिले, तांकर घरे महिला मानन को अनेक जंत्रणा दउथिले. निराश, ग्रीफ, डेस्पेयर एंड पेन, दे आर रन इन दिस ग्रीफ, डेस्पेयर एंड पेन. एगुडी सब धीरे 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 सब बंद कर दिया गला ए ट्रस्ट बोर्ड माध्यम. नेक्स्ट होची गोटे एनजीओ ए होची अन्ना हजारंकर ट्रस्ट रो ए सब कार्यक्रम थिला. देखो केरे सुंदर एनजीओ गठन करितले. अन्ना हजारंकर ए पर्यंत मध्य बहु प्रकार रिवोल्यूशन आम देश पई चालू रही दिल्ली रे, जानिथिबो सब. नेक्स्ट थिला सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, सेवा गोटा एनजीओ, नेशंस गोटा big NGOs, SEWA, Self-Employed Women's Association, ACWA. So SEWA has made significant contribution to the empowerment of women. महिला मानकर empowerment पाई ये जो SEWA NGO organization helped a lot. It had strived to integrate self-employed poor women with the mainstream economic through the twin strategy of struggle and development.
स्ट्रगल एवं डेवलपमेंट माध्यम रे जो गरीब महिला माने थिले तांको सशस्त्रीकरण कर दिया गला विभिन्न प्रकार सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैड बीन इंप्रूव्ड ऑफ दिस पुअर वुमेन सो नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ सेवार कौन सब अच्छी को भला प्रकृति रो कौन तार सब इंपोर्टेंस अच्छी ये जो सेवा इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन वुमेन आर द वर्स्ट विक्टिम इन पॉवर्टी दारिद्र्य महिला माने सब बळे कसाघात रे जर्जरित होइतांती सो पुअर वुमेन जनरली एक्सपीरियंस ए वेराइटी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिप्राइवेशन इन सोसाइटी महिला माने गरीब महिला माने समाज रे जते प्रकार विभिन्न उत्साहजनक कार्यक्रम करा जाय थाए सेमान तादरु डिप्राइव होइतांती वंचित होइतांती एन्जॉय करि पार न so how can possible the root cause of women's flight has been unemployment lack of income economic dependency in family or community अर्थनैतिक पुरुष मानक ऊपर डिपेंडेंसी हबा महिला माने तो सब क्षेत्र में वंचित हेबे महिला माने सशक्तिकरण केतेबेले हेबे जेतेबेले से माने इंडिपेंडेंट इनकम करि परिबे स्वावलंबनशीलता हासिल करि परिबे ताले परिवार समाज तांकू रिकॉग्नाइज करि थाए से माने सशस्त्रीकरण हैला बोली सब क्षेत्र से माने पार्टिसिपेट करि परिबे सो महिला मानकर इंडिपेंडेंट इनकम सेल्फ रिलायंस स्वावलंबनशीलता एकांत अपरिहार्य सो in fact poverty reduction by way of income generating activities has emerged as the major concern of the state and most NGO or voluntary organization working with poor women and in the absence of regular salaried jobs poor women mostly venture into self-employed activities such as vendors hawkers home-based craft workers or garment makers domestic workers and the service providers महिला माने सब एभली सब विभिन्न प्रकार माने जो रेगुलर तंका सैलरी नथिले मध्य एभली सब विभिन्न प्रकार टेम्पररी वर्कर्स माने इन्वॉल्वमेंट हेले काम धंदा रे इन्वॉल्वमेंट हेले एवं रोजगार क्षम होई पागिले these self employed women workers are generally prone to insecurity inherent in the nature of these vocations they usually have low incomes, limited or negligible capital and asset to support them. Without direct access to mainstream markets or institutional support, their productivity tends to be low and they remain trapped in the vicious circle of poverty. जेहेतु सेमानकर रेगुलर इनकम सोर्स नथिला टेम्पररी इनकम हिसाब रे किछि किछि आय करूथले स्टिल दे आर रन इन विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी दारिद्र्यर विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी माने दारिद्र्यर एक कराल चक्र रे समान सब बेले रहउथिले महिला माने गरीब महिला माने सो सेवा जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन अछि तार सब कोन सब ऑब्जेक्टिव सब थिला लाइक क्रिएटिंग कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट फॉर इट्स मेंबर्स मेंबर माने पूर्ण भाव रे नियुक्ति किभଳି सुयोग पाई परिबे अफेक्टिंग एंड इंक्रीज इन द इनकम्स ऑफ मेंबर्स महिला माने सेमाने किभଳି मेंबर माने सदस्य माने किभଳି सबु तांकर इनकम जनरेट करि परिबे एवं एनहांसिंग एडेक्वेट फूड एंड न्यूट्रिशन किभଳି सेमाने कलेक्ट करि परिबे मेकिंग सुइटेबल प्रोविजन फॉर सेफगार्ड हेल्थ प्रोविजन रखा जायतला तांकर भलो स्वास्थ्य निरोग रहिबा पई एवं फैसिलिटेटिंग केयर चिल्ड्रन ऑफ इट्स मेंबर जो मान मेंबर थिले तांकर पिला मानकर जंत्र किभଳି रखा करा जाय परिबो इंप्रूविंग द लिविंग हाउसिंग कंडीशंस घर द्वारा ए सब किभଳି भला कंडीशन रहि परिबो मोटिवेटिंग इंडिविजुअल मेंबर्स टू क्रिएट देयर ओन एसेट एनहांसिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एनकरेजिंग द वर्कर्स फॉर लीडरशिप एई भଳି सब विभिन्न प्रकार ऑब्जेक्टिव सब थिला हमर सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सो सेवा बैंक मध्य सेवा जो सेवा संस्था थिला ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जेहेतु वीक मेंबर माने वीक थिले फाइनेंशियल वीक थिले पुअर सेक्शन थिले तेणु आउटसाइड गवर्नमेंट बैंक किंबा अन्य प्राइवेट बैंक सेमान को लोन दो नथिले ताले सेमाने निजे गोटा सेवा बैंक गोटा गठन कले हैं निज डिजायर निज इच्छा शक्ति बल रे निज मोटिवेशन पावर बल रे सेमाने गोटा निजस्व बैंक सब गठन कले किभଳି
कोबळी सब बैंक कले सेवा मेंबर्स डिसाइडेड टू सेट अप देयर ओन बैंक विथ an initial contribution शेयर मात्र 10 टंका 10 टंका देगिरी about 4000 self employed women तादरे पार्टिसिपेट कले इन्वॉल्वमेंट है. So the Sri Mahila Seva Sahakari Bank Ltd was registered during 1974. The bank ना थिला सेवा सहकारी बैंक एलटीडी सेवा सहकारी बैंक 1974 रे रजिस्टर्ड हला 10 टंका लखा आदाय करी 4000 लोक इन्वॉल्वमेंट हले कलेक्शन कले 10 टंका लखा. सो सेवा बैंक मेड द फॉलोइंग इनोवेशंस. कौन सब कला सेवा बैंक? कलेक्शन ऑफ सेविंग्स फ्रॉम होम्स और मार्केट्स. सेविंग सब संचय सब खाता खोलिले बाजार रु एवं घरु सदस्य मानक ठारू पासबुक विथ ए फोटोग्राफ रादर दैन ए सिग्नेचर एज मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन. केवल गोटे पासबुक रे फोटोग्राफ रहइबो. आउ कीपिंग द अकाउंट्स कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली. परिवार रो मेल मेंबर ठारू सेटाकू गुप्त रे रखा गला कारण मेल मेंबर देखिए माने से पैसा टाकू एनकैश कर देबे. तेणु महिला माने पुरुष मानक घरे पुरुष मानक सेटा कॉन्फिडेंशियल रखिले हाइड कर रखिले. डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल लोन्स रूल्स एंड प्रोसीजर. विभिन्न प्रकार लोन जार दरकार पड़िबो से थ्रू लोन नै परिबो. जो 4000 लोक 10-10 टका जो आदाय करथिले जेति पैसा हला जे जेति चाहिबो से नै परिबो. फ्लोटिंग इनोवेटिव सेविंग क्रेडिट स्कीम also allowed. फ्लोरिशिंग ट्रेनिंग असिस्टेंट इन बैंकिंग प्रोसीजर. बैंकिंग प्रोसीजर ट्रेनिंग इत्यादि सब मध्य दिया गला. बैंक केमती कैश कलेक्शन करा जिवो कि भली डिपॉजिट करा जिवो कि भली क्रेडिट सैंक्शन करा जिवो इत्यादि इत्यादि. तापर होची कोन एनजीओ मानकर आउ सब कोन वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन अछि. इंटीग्रेटेड अप्रोच टू माइक्रो क्रेडिट. छोटो छोटो क्षुद्र क्रेडिट सब कि भली लोन सब सैंक्शन हबो. इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लिंकेज विथ द मार्केट. मार्केट को इंफॉर्मेशन सूचना मध्य प्रदान करा गला. मेकानिज्म एंड टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स आज may enhance productivity. So adequate infrastructure for operational markets. Infrastructure madhya jogai diya gala market operation kariba pai. Facility pertaining to health, social security, participation in the process of decision making ए सब करा गला. So next innovative methodology सब कौन सब अछि सेवार. सेवा बैंक begins its lending activities by motivating and encouraging women to save. Mainly motivation दिया गला funds किभली सेविंग करा जिवो. How capital will mobilize. If funds will save more and more, that will facilitate to the bank to sanction loan. Those have deficit income. जो मानकर स्वल्प आय अछि बा स्वल्प पूंजी अछि से माने एथ्रू लोन नहीं परिबे. The surplus income holder they can save and the deficit income holder they can collect the funds from Seva Bank. The group approach is employed in rural areas while the individual approach is mostly used in urban areas. Group approach गुड़ाक सबु गाँ गंडांचल व्यवहार हला. इंडिविजुअल अप्रोच गुड़िक सबु सहरांचल अर्बन एरिया मानकरे लोन सैंक्शन करा गला इंडिविजुअल जे नेबे. So एबोली सब सेवा बैंक फर्निशेस टेक्निकल असिस्टेंट टू बरोर. जो माने बरो कले टेक्निकल असिस्टेंट सब तांको दिया गला. कार छोटो छोटो पार्ट्स दरकार मशीन टूल दरकार सेही अनुसार कम परिमाण रो लोन दिया गला. जो मानकर मशीन टूल बा सिलाई मशीन बा क्षुद्र टेक्निकल इनोवेटिव आइडिया दरकार तांको सेगुडा सब जोगे दिया गला. It enables them to procure suitable inputs raw materials collection कले फैक्टर टूल्स मध्य से माने परचेज करले ए लोन माध्यम रे रिक्वायर्ड फॉर देयर सेल्फ एम्प्लॉयड एक्टिविटी. इट आल्सो फैसिलिटेट्स लिंकेज विथ द मार्केट फॉर सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज. जोगुडा प्रोडक्शन हला ए मशीन टूल माध्यम रे तारा आउटपुट गुडी को किभली बाजार रे मध्य बिक्री करा जिवो तार मध्य बंदोबस्त करा गला एनजीओ माध्यम. सो ये गोटा गला एनजीओ. तापर आउर से गोटा बड़ नेशनल वाइड एनजीओ अछि बा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन that is प्रदान. केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट रे मध्य प्रदान कार्यक्षम एबे एक्टिव अछि. सो प्रदान नो फुल फॉर्म होछि प्रोफेशनल असिस्टेंट्स फॉर डेवलपमेंट एक्शंस. प्रोफेशनल असिस्टेंट्स फॉर
development action known as pradhan. Sir, Ha, hello. Ha, sir, ये सब क्वेश्चन केमती टिके आसीबो टिके कहि थांदे. ei bhaliya question discuss about pradhan's basic nature, objective and work activities. बुझेला? आज्ञा सर. ei bhaliya nature or basic features or the work activities of pradhan as a social as a voluntary organization. So Anna Hazare have made the revolution in Maharashtra. बुझेला ना नहीं एवरा सब क्वेश्चन सब बा शॉर्ट क्वेश्चन आसी परिबो व्हाट इज सेवा जोटा हम पढ़े डिस्कशन करले सो लाइक द सिग्निफिकेंस ऑफ pradhan lies in the satisfaction and the scaling down of technology for the compression of benefit of the rural people. गांगना अंचल लोक मानक पई विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग एवं चाषबास बा चारा गछ जोगेबा इत्यादि ए प्रदान होची मुख्य कार्य गरीब आदिवासी अंचल रे एसु चारा रोपण जोगेबा लोक मानकु ट्रेनिंग दबा टसर चाष करेबा इत्यादि होची एवं सिल्क प्रोडक्शन करिबा एवं गो पालन करिबा एवं अन्यान्य कुकुड़ा चाष करिबा ए प्रदान होची मुख्य कार्य सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओली क्रिएट हे परिबो सो प्रोफेशनल असिस्टेंट फॉर डेवलपमेंट एक्शन और प्रदान was established during 1983 1983 रे एस्टैब्लिश हेतला एंड आज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ हिसाब रे ताकू गणना करा गला सो इट हैज फर्निश्ड प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल सपोर्ट टू वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ छोटो छोटो एनजीओ को मध्य और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन मध्य ये कोऑपरेशन कला है प्रदान आज local communities in rural areas. The central concern of Pradhan has been to build the core competence of local voluntary organization, NGO, so that they become a potent medium for the effective transmission of appropriate technology to strengthen the economy and activities pursued by rural communities. During the earlier phase, Pradhan used to place its professionals into local voluntary organization, enhancing their capacity and competence, implementation of poverty alleviation program, etc., and provide the training facilities to the cow rearers and goattery. Those are rearing the goattery and piggery, duckery. जो माने बतक गाई पालन करिबा एवं छेली चाष करिबा छेली पालन करिबा एमानकु मध्य ट्रेनिंग इत्यादि दिया जाय प्रदान माध्यम So voluntary organization or NGO in the areas of administration, technology and community organization, they also acted as an interface between local voluntary organization NGO and a projected management agency or the institution of the state engaged in the process of rural development. Pradhan specially focused on the rural development in different aspects. However, later on Pradhan shifted to mechanism of organism development support teams. तापरे गोटा टीम डेवलपमेंट सपोर्ट टीम भाबरे से गणला ऑन एन एरिया बेसिस सो एज टू रूट इन ऑपरेशन रूरल लोकल कम्युनिटीज भाया वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन माध्यम रे टीम वर्क मध्य कला टीम वर्क रे ईच मेंबर ऑफ द टीम इज हेल्ड रेस्पोंसिबल इट इज नॉट ग्रुप एक्टिविटी सो प्रधान जो छोट छोट एनजीओ मानन को जो सहायता कला टीम activities हिसाब रे कारण टीम गोटे ग्रुप थारु मोर स्ट्रांग ए टीम वर्क इज मोर स्ट्रांग देन ग्रुप वर्क कारण गोटे टीम रे प्रत्येक मेंबर हेल्ड रेस्पोंसिबल फॉर एग्जांपल द सैटेलाइट लॉन्चिंग इन इसरो मंगलायन सूर्यायन जोडा का सब लॉन्च करा जाउची सैटेलाइट कोठी इसरो रे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आमर जो सैटेलाइट लॉन्च करा जाउची दैट द साइंटिस्ट टीम वर्क ता कुआ जाय प्रत्येक वैज्ञानिक जो मंगलायन बा रॉकेट जान निक्षेपण करा जाउची सैटेलाइट गुडी को ईच साइंटिस्ट इज हेल्ड रेस्पोंसिबल दैट इज नोन एज टीम वर्क यदि प्रत्येक वैज्ञानिक तांकर दायित्ववान थाए जनकु छाड़ देल हबो नै समस्तंकर दायित्ववान
समस्तंकर उद्योग हेले जाइकरी गोटे सैटेलाइट लॉन्च करि परिबो अदरवाइज इट बिकम फेल्योर द टीम वर्क इज फेल्योर so team work is more strong than the group activities or group work the team provide expertise to voluntary organization so team expertise प्रदान करि थाए a particular significance has been प्रदान concept field university it made efforts to motivate socially committed young professional to work in a village by providing learning space for them in the field the membership based general body of pradhan is constituted by representatives drawn from voluntary organization so pradhan kon kare general body विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन नु जने लखा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जने जने रिप्रेजेंटेटिव कलेक्शन करि थाए इनवाइट करि थाए रिप्रेजेंटेटिव अन्य माने वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन सो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड प्रोफेशनल वर्किंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर सरकारी बेसरकारी उद्योग मानकर जो माने सब काम करूथांती सरकारी उद्योग रहू बेसरकारी उद्योग रहू डॉक्टर हो इंजीनियर होंतु बा साइंटिस्ट होंतु सोशल वर्कर होंतु सेमानकु जने लखा बा एजुकेशनिस्ट होंतु शिक्षाविद होंतु पॉलिटिशियंस होंतु समस्त की सबु ऑर्गेनाइजेशन नु गोटे लेखा मेंबर आनी के प्रधान रो मेंबरशिप गठन करा जायता सो स्ट्रांग वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन प्रधान नेशन वाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेस आर जनरेटेड थ्रू contribution and fees charged in lieu of furnishing professional and technical services so NGO institution of state and other developmental agency that donate the funds pradhan has also received project specific grants from state and other donor agency engaged in rural development so pradhan सब राज्य बाहरु एवं देश बाहरु मध्य फंड्स कलेक्शन करि थाए सो प्रोडक्शन प्रधान गोटे काम करि थाए केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट बांसपाल अंचल रे प्रधान र सिल्क जो टसर चाष पई आदिवासी बहुल प्रवण अंचल रे लोक मान को प्रोत्साहन देता है मोटिवेशन देता है बांसपाल अंचल रे प्राय केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट रे टसर चाष करा जायता है विभिन्न टसर चाष पई गोटा स्पेशल वृक्ष रोपण करा जायता है जोठी टसर माने से पत्र को खाइकरी तांकर वंश विस्तार करी सिल्क सब कलेक्शन करा जायता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधान वाज टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ टसर सब कलेक्शन करा हिल ट्राइबल अंचल मानकर एंड डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लास पुअर वुमेन लिविंग इन रूरल एरियाज इन बिहार अंचल रे मध्य प्रधान बहुत काम सब थाए जो माने दारिद्र्य सीमा रेखा तले अछंती बा महिला मानकर लिविंग स्टैंडर्ड डेवलपमेंट करिया पई सेति पई टसर चाष पई मोटिवेशन दिया जाय थाए so main components of pradhan ro component गुडी का कोन अछि सब डेवलपिंग ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्लॉट एंड अर्जुन एट ए लो कॉस्ट अर्जुन गछ सब दिया जाय थाए कम रेट रे कारण अर्जुन गछ सब चारा रोपण कले टसर गुडी को ताथरे जो पोक गुडी को वृद्धि हे थांती ए अर्जुन गछर पत्र खाइकिरी तनु चारा सेति पय रोपण करिया पय बड़ बड़ फांका फील्ड मान करे ताले हमें सिल्क कलेक्शन करि परिबा लो प्लांट डेंसिटी एप्रोप्रिएट वाटर लैंड्स वेस्ट लैंड्स यूजुअली एक्सेसिबल टू द पुअर जोगुडा का आबाद जमी गुडा का अछि गरीब लोक मान नै गिरी सेठी माने अर्जुन गछ लगाई गिरी टसर चाष करूथले तापरे एनकरेजिंग लीफ फेंस हेंस रिड्यूसिंग कॉस्ट एनकरेज करा जाउथला चतुर्पार्श्व रे आबद्ध करी से गछ चारा गुडी को सब मध्य लगाउथले तो ये भली कले से मानका सेल्फ एम्प्लॉयड हे परिबे एवं से माने रोजगारक्षम हो परिबे मशरूम चाष करिबा मशरूम प्रोडक्शन सिंप्लिफिकेशन ऑफ मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वंस क्लोज प्रदान कोन करथला मोटिवेशन इंस्पिरेशन लोक मान करथला जे मशरूम जो छतु चाष करिबा पाए विभिन्न मॉडर्न टेक्निक रे कि भली छतु चाष करा जाय परिबो तापर प्रदान कोन करथला this dissatisfaction of technology of for hide and skin players pradhan has made a significant successful contribution to the development of a highly marginalized rural community players hides and skin a particular section among them scheduled caste has followed the tradition of flying skin in rural India
They usually rely on such methods of processing schemes as are not conducive for producing leather products of high value. जोगुड़ाक लीदर चमड़ा जातीय जो आमर पशु पालन करवा सो लोमस मेंढा जोगुड़ा प्रचुर परिमाण रे माने रूम सब सब जोगे थाए जो शीत वस्त्र प्रोडक्शन होता है. प्रधान took the responsibility to generate the remaining financial resources from Oxfam India. Oxfam गोटा होची इंटरनेशनल एनजीओ ताधर मध्य जनरेट करिथाय इनकम सोर्स. प्रधान furnished the specification for construction and equipment while the cooperative executed the task of construction and processing unit. प्रधान मध्य कंस्ट्रक्शन यूनिट सब अछि, ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन यूनिट अछि, विभिन्न प्रकार कंस्ट्रक्शन वर्क प्रधान मध्य नहीं था. प्रधान has demonstrated that standard technology need to be studied and simplified to suit the requirements of a local community. The small technology, standard technology that very simplified, dynamicified, that how it is needed by the local people, how they require, and for what purposes that small technology is required for the rural people. So सेतिपाई प्रधान मध्य फाइनेंस जोगै थाए. So प्रधान बहुत प्रकार कार्य नेशन वाइड मध्य अच्छी. So सेही भली आउ कोन सब अच्छी सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर ये गोटा होची एसडब्ल्यूआरसी. ये जो एनजीओ सब अच्छी नेशन वाइड आदर गोटे आसीबो सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर एसडब्ल्यूआरसी. So here kon kam a volunteer organization SWRC has been successful in imparting sustainable development for a rural community in Tilonia, Rajasthan area. The approach adopted by SWRC has challenged the wisdom conventional academic approach to rural development. सब गुडी को जत्ते हमर अछि एनजीओ गुडी को सब रूरल डेवलपमेंट ऊपर फोकस करू किभली लोक माने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है परिवे, स्वावलंबनशीलता हासिल करि परिवे, वुमेन एम्पावरमेंट है परिवे, ये सब ऊपर मुख्यतः फोकस करि थाए. सो कैरेक्टर ऑफ एसडब्ल्यूआरसी कोन तार कैरेक्टर अछि वैशिष्ट्य बा तार लक्षण कोन है पारे. एसडब्ल्यूआरसी वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग 1972 इन तिलोनिया, a remote village district in Ajmer, Rajasthan. गोटा रिमोट डिस्ट्रिक्ट अछि राजस्थान रो आजमेर डिस्ट्रिक्ट रे तिलोनिया अंचल रे. इट्स फाउंडर संजीत बुक्कर रॉय has applied an innovative and unique approach to rural development. He rejected the role of a formal education or professional expertise in the process of rural development. से केते गुडे कथा को ध्यान देले, सचेतनता सृष्टि करले, फॉर्मल एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन को रिजेक्ट करले, expertise in the process of rural development. Rather, he believed in harnessing indigenous form of traditional knowledge, skill, practical experience for affecting sustainable development among rural community. आमर जो पुराना कालिया ज्ञान, पुराना कालिया एफिशिएंसी, पुराना कालिया स्क्रैप ये गुडा को ऊपर से ध्यान देते. सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था पर से गुरुत्व दउनथले. कारण राजस्थान रे आमे देखिबा बहुत प्रकार माने हाथ कामर सुंदर कारुकार्य सब थाए राजस्थान रे. सो ट्रेडिशनल क्राफ्ट सब सेगमान सब मोटिवेशन देले एवं ट्रेनिंग देले तांकर जो सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर माध्यम रे से देखले ट्रेडिशनल जिंस गुडा बहुत मन पसंदर एवं बाजार रे तार प्राइस मध्ये हाई जो प्रोडक्ट गुडी को तो ता पर से फोकस करथिले. SWRC envisages utilization of a traditional knowledge, self-mobilization of community, and a judicious use of local natural resources for creating conditions the productive potential people in rural areas. तेणु ट्रेडिशनल पुराना कालिया गतानुगतिक नॉलेज ज्ञान उपरे फोकस करथिले. सो our SWRC focuses on the points, some of the important points also, functioning like working and living in close
proximity to rural community एगुड़ी को सब rural community मध्य देकरी बा पाखापाखी अंचल रे ए सोशल बा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन काम करूथिला फर्निशिंग सोशल स्पेस फॉर क्रिएटिव एंड प्रोग्रेसिव पर्सनल ग्रोथ जो व्यक्ति माने आधरे मेंबरशिप थिले तांकर पर्सनल ग्रोथ ऊपर मध्य एसडब्ल्यूआरसी फोकस करूथिला गुरुत्व दउथिला नो डिस्क्रिमिनेशन टर्म्स ऑफ कास्ट क्लास एजुकेशन रिलीजन एंड स्टेटस कौनसी डिस्क्रिमिनेशन नथिला मत पार्थक्य नथिला समस्त समान जो जाति वर्ण धर्म निर्विशेष रे समस्त समान व्यवस्था प्रदान करा जाउथिला प्रैक्टिसाइजिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जेंडर इक्वालिटी ये मेल से फीमेल कम काम करिवो से फीमेल कम रेम्युनरेशन पाइबो एगडा सब किछि नथिला सो adhering to democratic practice in functioning the organization ये होची डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक पद्धति रे समान सुविधा समान आईन समस्त व्यवस्था करा जायतला तापर कोन करायतला ना सेंसिटाइजिंग सेंसिटिविटी टुवर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस प्राकृतिक संबल को किभली सुरक्षा करा जाय परियो तापर मध्ये गुरुत्व देउथिले ये गोटे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन गला नेक्स्ट होची तरुण भारत संघ टीबीएस तरुण भारत संघ टीबीएस watershed development करथला TBS made an initial voluntary intervention related to watershed development in village Bikampura district of Alwar Rajasthan ए voluntary organization TBS तरुण भारत संघ एटा मध्ये राजस्थान रे काम करूथला ड्यूरिंग 1985 रे रजिस्ट्रेशन होइतला situated in semi arid region the village suffered from acute shortage of water राजस्थान मोस्टली हम थर मरुभूमि जानिछथि तेनो सेठी वर्षार स्कांति वर्षा सेते रेनफॉल होनथला क्रॉप्स फेल्ड रेगुलरली चाषबास रे बहुत खेती होतला रेगुलरली सफर्ड lack of vegetation had resulted in soil degradation in the areas so founder of this Rajendra Singh जे कि फाउंडर ऑफ दिस तरुण भारत संघ राजेंद्र सिंह फाउंडर ऑफ दिस वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन तरुण भारत संघ established during 1974 had basically moved Bhimkapur to spread literacy and fight against injustice to people literacy बढ़ाउथला एवं injustice अन्याय अत्याचार लोक मानक ऊपर जोटा होतला ता पर मध्ये ध्यान दउथला destiny had something else in store for him a village resident also helped a lot Rajendra Singh knew nothing about this dimension of water in rural areas the scarcity of water in rural areas as Rajendra Singh do not know so when he came his knowledge about the scanty supply of water so they started organization and attracted to youth from these areas and developed the organization, the volunteer organization. Heeding the advice, Rajendra Singh made up his mind to build johats in the area surrounding Bhimkapur. He motivated the local communities and showed their active participation, contribution for building water harvesting structure. So, Rajasthan रे विशेष कर देखा जाए कौन वाटर हार्वेस्टिंग रेनफॉल वर्षा ऋतु रे जेतिकी स्कांटी वर्षा हुए ताकू कलेक्शन करी कि भली सेगुडी सब व्यवहार करा जाय परिबो एवं खरा दिने बा अन्य ऋतु रे सीजन रे वर्षा जो समय न होची कि भली सेगडा को सुरुख रे व्यवहार होय परिबो या पर मध्य ध्यान दउथले एई हमर तांकर एई कम्युनिटी बा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन सो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम मध्य हमर तरुण भगत सिंह जोटा हमर करिथिले तरुण भगत भारत संघ बा टीबीएस जोटा स्टेप नैथिले सेठी कोन सब आउ कोन करा हैतला ना हमर विभिन्न प्रकार वाटरशेड डेवलपमेंट मध्य करा जायतला कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करा जायतला सब कम्युनिटी माने इन्वॉल्व हेबे कारण एठी प्रत्येक जाति वर्ण धर्म समस्त इन्वॉल्वमेंट होतले these water harvesting structure were built in the active participation and contribution of the local community particularly in Rajasthan से local community रो जो कास्ट हो बा जो अन्य
जाति धर्म जो धर्म संप्रदाय रो रिलीजन ग्रुप रो समस्त इन्वॉल्वमेंट रहते नो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज और इंजीनियर वेयर इन्वॉल्व इन द प्रोग्राम कौन सी इंजीनियर बा प्रोफेशनल जो माने एक्सपर्टाइज से मानको मध्य आधरे इन्वॉल्व कराउंतला सेही लोक माने ही सेही लोकल कम्युनिटी विलेज लोक माने ही से माने एक्सपर्टाइज मोटिवेशन फल रे से माने निजे निजे सब एफिशिएंट हेरी गले एही कर्म क्षेत्र रे सो ट्रेडिशनल विजडम was used in the identification of sites and the designing of the structure हमें देखिबा पुराना कालिया जेते जिंस गुडाक ओल्ड इज गोल्ड तेणु अनेक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन पुराना कालिया एक्सपर्टाइज ऊपर विशेष कर गुरुत्व दउथला आजिकली जेते प्रोडक्ट देखुछ सब यूज एंड थ्रो हमें पेंट रे लिखुछंती यूज एंड थ्रो जेते वेहिकल आसुची देखो यूज एंड थ्रो 5-10 वर्ष हमें व्यवहार कर साला परे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो पुणी सेटा डैमेज हो जाउछ बा नष्ट हो जाउछ मेशिन टूल गुडी को कि पुराना कालिया जेते यंत्रांश देखो जेते मेशिन टूल देखो ए पर्यंत इंटैक्ट रहिछ तारा टिके कलंकी भी लागु नै पुराना कालिया कंट्रीब्यूशन होची मैक्सिमम सो कंट्रीब्यूट पुराना कालिया जेते जो ओल्ड बिल्डिंग सब देखिबो ए पर्यंत अक्षर नै कि रहिछ किंतु एबेकार बिल्डिंग सब डिमोलिश हो जाउछ ब्रिज गुडी के जो इंजीनियर माने तयारी करछन्ते निर्माण करछन्ते बड़ बड़ ब्रिज सब ओवर ब्रिज हो नदी ऊपर जो ब्रिज सब डिमोलिश हो जाउछ किछि दिन पर किछि वर्ष पर जा भांगी गला ब्रिजटा भांगला एते लोक मरि गले सो एई भली सब देखा जाउछ सो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कम्युनिटी पर्टेन टू cash and voluntary labor initially it became difficult to convince poor communities for taking a contribution प्रथम से मानु सब बहुत प्रकार असुविधा होतला लोक मानु को मोटिवेशन करबा पई to involve in this work activities तापरे ऑटोमेटिकली राजस्थान से अंचल लोक माने इन्वॉल्वमेंट हेले so agriculture become a feasible productive and profitable vacation since sufficient water become available the condition of soil improved and resulted in better crops and increase in agricultural production जेतु खूब कम वर्षा होतला से अंचल रे तनो ये वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन हिंद भारत ट्रस्ट जोटा हमर एंड तरुण भारत संघ जो प्रोजेक्ट नेले वाटर शेड डेवलपमेंट पाई तो धीरे धीरे कोन हला से जो वर्षा जल गुड को कलेक्शन करा जाय करी ताकू विभिन्न चाषबास मध्य से माने स्टार्ट कर देले प्रोडक्शन प्रचुर हला द लोकल कम्युनिटीज हैव बिकम प्रॉस्पेरियस एंड सेल्फ रिलायंस सो से माने चाषबास करले स्वावलंबनता हासिल करले द क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज इंप्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट इन द रीजन बिकॉज़ ऑफ एक्सपोजर टू collective participation and striving there is enhancing social solidarity within the community in Rajasthan in the area they are now care for the education of children and have become more aware about their rights so धीरे धीरे तांकर पिला मानकर सब शिक्षा संप्रसारण करैले पिला माने हाई एजुकेटेड हेले एवं से माने राइट्स दे questioned against the government if there will be any facilities as given by the government they raise the question the planning strategy must properly utilized in their area so proper application of all the funds as allowed by the government of India they raise question if there is not proper planned way the disbursement is held by the government sector सरकारी क्षेत्र मानक द्वारा जो प्रकार फंड सब सैंक्शन होची योजना माध्यम रे जदि से माने अंचल जदि प्रॉपर यूटिलाइजेशन न होला प्लानिंग स्ट्रेटजी माध्यम रे सो अगेन दे रेज क्वेश्चन कारण से माने शिक्षित होले से अंचल रे सो तरुण भारत संघ माध्यम रे शिक्षा बढ़िला प्रसार एवं सेमानक स्वास्थ्य मध्य सचेतन हेले एवं खाद्य वस्त्र सब प्रकार पर से माने गुरुत्व देले कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट हेले यही भली अनेक एग्जांपल सब विभिन्न एनजीओ विभिन्न समय काम करी आसीचंती नेशन वाइड गोटे बड़ बड़ एनजीओ कि भली छोट छोट एनजीओ मानको कोऑपरेशन करूचंती अनेक एनजीओ अछि फंड्स धीरे धीरे आना हजार जिभली बाहर फंड्स कलेक्शन न करी निज मेंबर माध्यम रे से माने फंड्स कलेक्शन करी कि भली ग्रो करले
So ବିଭିନ୍ନ aims and objective character as possessed by the NGOs or voluntary organization. কিভাবে কেতে কষ্টরে ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନେସନ ୱାଇଡ ବିଗ ଏନଜିଓ ଭଲଣ୍ଟିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେମାନେ ଗଠନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ ଆଧରୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟିସିପେସନ, ହ୍ୱାଟ ମିନ୍ ବାଇ କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟିସିପେସନ, ଆମେ ଯେତେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଭଲଣ୍ଟିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟିସିପେସନ କିଭଳି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ହାଉ ଦେ ଆର୍ ମୋଟିଭେଟେଡ, how they are involved in different work activities, you can write in your answer script. What do you mean by community participation? Community participation आम प्रत्येक volunteer organization क्षेत्र में सब डिस्कशन करी आसिले। तेणु community organization कहले जने गोटा पेज लिखि दे परिबो। प्रत्येक कम्युनिटी रे प्रत्येक वर्गर लोक माने एठी आउ डिस्क्रिमिनेशन नाही, सोशल डिस्क्रिमिनेशन किछि नाही, all are equally treated, justice are applied, equity treatment is applied, so all are equal. समस्तंकर शेयर, each member feel as the family member of this organization. मु जे भली परिवार रे मु जने सदस्य भाव रे सब प्रकार सैक्रिफाइस करूची, ठीक से भली मु जने एनजीओ बा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जने मेंबर माने आई विल सैक्रिफाइस ऑल माय वर्क और लेबर और टाइम as a family member. Unless otherwise जे पर्यंत गोटा ऑर्गेनाइजेशन रे मु जदि निजुकु से ऑर्गेनाइजेशन जने सदस्य बोली न भाबिबी, so that 100% output is impossible. I cannot sacrifice my time and labor. प्रत्येक क्षेत्र रे मु जदि भाबिबी मु एई ऑर्गेनाइजेशन जने परिवार रो मेंबर भाबरे, so that I can sacrifice. My dedication sacrifice will automatically will grow. The organization automatically will expand. So social welfare will maximize automatically. प्रत्येक सदस्य निजुको भाबिबा दरकार मु ए ऑर्गेनाइजेशन जने परिवार मेंबर हिसाब रे जदि मु भाबिबी ताले मोर डिजायर टू वर्क, विलिंगनेस टू वर्क, एफिशिएंसी, नॉलेज, स्किल सब गुडा को डेवलप हो. So the organization will expand and grow. All will live peacefully. Our standard of living will automatically increase. Social welfare also held possible. The NGO, the volunteer organization, become one of the famous volunteer organization all over the country. The name and fame of the volunteer organization will grow, held possible. So that all the council part of today's, and I marked a full stop here in my counseling today. So I have only remain one class, one counseling. Yes, sir. Asanta kali to complete kari jibo. Okay, sir. Sure. Yes, sir. Yes, sir. Sunita ita moro sari jau. तापर तुम पेज को डिस्कशन करिबा हला. Yes, sir. Yes, sir. सरी जाऊ आसंता काली मुटे व्यस्त रहउची. Yes, sir. So ये अछि कि ए चंदन अछि कि पाखरे? Sir, I'm at home, sir. तुम से इग्नोर छ ना कोठी? No, sir. Sir, I'm at home. अच्छा अच्छा घर पळे आले. Yes, sir. अच्छा ठीक है. Sir, thank you, sir. I marked a full stop here in my counseling today. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. thank you to all.